আলোচনা কৰিম আমি কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব পাৰিম। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वचन का ऊपर हम लोग कैसे परमेश्वर का जो फैमिली है, परिवार का हम लोग सदस्य बन पाएंगे। परमेश्वर का फैमिली होना, इसका पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का फैमिली होने का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली। परमेश्वर का जो परिवार है उसका सदस्य होना, उसका मीनिंग क्या है, पहले उसको जानना पड़ेगा और उसका बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर का फैमिली का कैसे हम लोग मेंबर हो सके। ये बाइबल एक जो इसमें अनेक सा न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं या ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेट जो है उन लोग का बीच में हम लोग देखते हैं। प्रभु परमेश्वर ने अनेक बार प्रोफेसी के द्वारा कहा है कि मैं तुम्हें चुन के, मैं जाति से में से, मैं देश में से तुम्हें चुन के मैं अपना जगह, अपना स्थान पे जगह पे लेके जाऊंगा। मैं नतुन नियমৰ পৰা এটা বাক্য পঢ়িবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম যোহন 3 অধ্যায় 1 আৰু 2 পদ। 1 John chapter 3 verses 1 and 2. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. অসমীয়া বাইবেলৰ পৰা মই পাঠ কৰি দিম একেটা বাক্যই। প্ৰথম যোহন 3 অধ্যায় 1 পদ আৰু 2 পদ। চোৱা আমি যেন ঈশ্বৰৰ সন্তান বুলি বিখ্যাত হওঁ, ইয়াতে পিতৃ আমাক কেনে প্ৰকাৰ প্ৰেম দান কৰিলে আৰু আমি সন্তান হৈছোঁ, এইকাৰণে জগতে আমাক নাজানে কাৰণ তেওঁক নাজানিলে। সেই প্ৰিয়বিলাক এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান আছোঁ, কিন্তু পাছত কি হ'ম সেয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা নাই। তেওঁ প্ৰকাশিত হ'লে আমি তেওঁৰ নিচিনা হ'ম ইয়াকে জানো, কিয়নো তেওঁ যেনেকুৱা আছে তেওঁক তেনেকুৱাই দেখিম। ইয়াতে আমাক এই বাইবেলে কৈছে যে আমি এতিয়া ঈশ্বৰৰ সন্তান। ইয়াতে লিখিছে যে that we should be called children of God. আমাক ঈশ্বৰৰ সন্তান বা ঈশ্বৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোৱা গ'ল। কিমান ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যে আমাক ঈশ্বৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোৱা গ'ল। যেতিয়া আমাক ঈশ্বৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোৱা হ'ল তেতিয়াহ'লে অট'মেটিকেলি ঈশ্বৰ আমাৰ পিতৃ হিচাপে বা পিতৃ হ'ল। So to become a part of God's family, अर्थात इसका मतलब है हम लोग परमेश्वर का परिवार का सदस्य होने का मतलब, पहला मतलब है जे हम लोग जो पिता जो है, परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर जो गॉड कहा जाता है, गॉड द फादर, हम उनका क्या है, हम उन्हें पिता कहने लगा। आपको ये बात में आश्चर्य नहीं लगा होगा कि हम लोग सभी व्यक्ति परमेश्वर को पिता कहते हैं। आमी সকলোৱে ঈশ্বৰক পিতা বা পিতৃ বুলি কওঁ। আমি ঈশ্বৰক জনা বা পৰজাতি বা সকলোৱে ঈশ্বৰক পিতৃ বুলি কয়। এতে ডাঙৰ কথা কি আছে? কিন্তু যেতিয়া আমি আচল বা গেহৰাই বা গভীৰতাৰ বিষয়ে আমি চাওঁ, বাইবেলৰ গভীৰ তত্ত্বটো যেতিয়া বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া আমি এই কথাটো গম পাওঁ যে আমি ঈশ্বৰক পিতৃ বুলি মতাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাইছিলোঁ। हम लोग जितने भी लोग दुनिया में हैं, हम लोग परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आदम और हवा जो परमेश्वर का विरुद्ध होकर जो पाप किया, उन पाप का वजह से हम लोग परमेश्वर का संतान होने अधिकार खो दिया। We are no more called the children of God. हम लोग को परमेश्वर अभी संतान रूप से नहीं देखते हैं, क्योंकि संतान रूप से इसीलिए नहीं देखते हैं, हम लोग पाप में से है और हम लोग परमेश्वर से सेपरेट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया।
परमेश्वर का साथ हम लोग का रिलेशन नहीं था। यीशु मसीह का आने का बाद हम लोग फिर से हम रीस्टैब्लिश हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर को पिता कहते हैं, वो परमेश्वर का पिता कहने का हक नहीं है उन लोग का, क्योंकि पाप का वजह से परमेश्वर का उपस्थिति से दूर चला गया। इसीलिए सम नंबर 51 एंड वर्स 5 में जब दाऊद ने इस वचन को कहा है, श्योरली आई वाज सिनफुल एट बर्थ। दाऊद रजाই কৈছে, মই জন্মতে পাপেৰে পৰিপূৰ্ণ, জন্মৰ পৰাই মই পাপেৰে পৰিপূৰ্ণ। sinful from the time my mother conceived me, মোৰ মাতৃয়ে পেটত গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা মই পাপী। দাউদে কিং ডেভিডে অৰ্থাৎ দাউদ ৰজাই কৈছে যে মই গৰ্ভতেই পাপী, গৰ্ভৰ পৰাই পাপী, আৰু মোৰ মাতৃয়ে কনচিভ কৰাৰ পৰাই মই পাপী। অৰ্থাৎ কি কাৰণে মই পাপী, অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি আছো, ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ হৈ আছো। সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰক নিজৰ পিতৃ বুলি কোৱাৰ যোগ্য নহয়। আপোনালোকে আৰু কিছুমান ভাৰ্চ আছে, তাক আপোনালোকে চালে আপোনালোকে গম পাব। এফিচিয়া চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্চ 12 যদি পঢ়ে তাতো লিখা আছে, ৰিমেম্বাৰ ডেট at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. খ্ৰীষ্টক নজনাকে আমি এই পৃথিৱীত আমি কি আছিলোঁ? বিদেশী নিচিনাকৈ আছিলোঁ। আমাৰ ঘৰ নাই, বাৰী নাই, আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ নাই, আমি এনেকুৱা ধৰণে আছিলোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ নাগৰিকতা, অৰ্থাৎ আমি এই দেশৰ বা আমি পৃথিৱীৰ নাগৰিক নহয়, আমি স্বৰ্গৰ নাগৰিক। কিন্তু স্বৰ্গটো আমাৰ নাগৰিকতা আমাৰ নাছিলে। हमारा जो स्वर्ग में जो सिटीजनशिप जो हम होना चाहिए, हम लोग का सिटीजनशिप नहीं था, अर्थात हम लोग स्वर्ग का अधिकारी नहीं था, क्योंकि हम लोग परमेश्वर से दूर चला गया। इसीलिए while God is the creator of all, he is not the father of all. Remember one thing, God is the creator of all, but he is not the father of all. परमेश्वर सब चीजों को बनाया है, लेकिन सबका पिता वो नहीं है। ঈশ্বৰ সকলো বস্তু সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁ গোটেই বস্তু বনাই দিছে, কিন্তু সকলোৰে পিতা তেওঁ নহয়। কিন্তু তেওঁ কাৰ পিতা হ'ব, তেওঁ কাৰ পিতৃ বুলি জনাজাত হ'ব? অনলি দোজ, তেওঁলোকৰ কাৰণে পিতা হ'ব যিবিলাকে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি, আচৰিত কাৰ্যৰ যোগেদি, থ্ৰু দ্য ৱাণ্ডাৰ ৱৰ্কিং অফ দ্য স্পিৰিট, believe and receive Jesus Christ and his sacrifice for their sins and reconcile to God. उन लोगों का पिता होगा जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया चमत्कार और यीशु मसीह का त्याग स्वीकार और यीशु मसीह का जो उसका हम लोग का पाप ने उसने धो दिया, ये सोचेगा उन लोगों को परमेश्वर का साथ रिकॉन्सिलेशन अर्थात पुनर्मिलन होगा। वही व्यक्ति लोग कह सकेगा कि मैं प्रभु का संतान हूं और वो मेरा पिता है। ये बाइबल कह रही है। বাইবেলে স্পষ্ট ৰূপে কৈছে তেওঁ সকলোকে সৃষ্টি কৰিলে, কিন্তু তেওঁ সকলোৰে পিতৃ নহয়। যিসকলে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিব যে পবিত্ৰ আত্মাৰ যোগেদি জন্ম হোৱা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট তেওঁ আমাৰ কাৰণে দুখ ভোগ কৰি চেক্ৰিফাইচ কৰিলে, ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে, আৰু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া আমাৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ যিটো মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আৰু সেই মৃত্যুৰ যোগেদি আমাক ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালত তুলনীয়া পুত্ৰ হিচাপে লৈ গ'ল বা তুলি ল'লে। বাইবেলত আপোনালোকে যদি চাই জন চেপ্টাৰ 1 and verses 12 and 13, জোহন 1 অধ্যায় 12 পদ 13 পদ, এই কথাটো পঢ়িলে মই কোৱা এই বাক্যটো বুজিবলৈ পাব। কি লিখা আছে? John chapter 1 verses 12 and 13. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. ইয়াতে কৈছে yet to all who did receive him, যিসকলে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিলে। কাক গ্ৰহণ কৰিলে? খ্ৰীষ্টক। To those who believe in his name, যিসকলে তেওঁৰ নামটো বিশ্বাস কৰিলে। কাৰ নামটো? যীশু।
He gave the right to become children of God. তেওঁলোকক অধিকাৰ দিলে ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে। Praise the Lord. ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামটো যিসকলে বিশ্বাস কৰিলে আৰু লগতে যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টই ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বলৈ অধিকাৰ দিলে। Right. He gave the right to become children of God. গতিকে to become a member of God's family, number one mean is that you can call God Father, God the Father. But how you can say God the Father? You have to believe, you have to receive Christ, you have to believe His name, then He will give you the right to become God's children and you can say, yes Lord, you are my Father. তেতিয়া আপুনি আৰু আমি ঈশ্বৰক ক'ব পাৰিম তুমি মোৰ পিতা হয়। 13 পদটো যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাত লিখা আছে, children born not of natural descent nor of human decision or a husband's will but born of God. স্বামীৰ ইচ্ছাৰ পৰা বা বংশসূত্ৰে জন্ম হোৱা নহয়, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা। ইয়াত লিখিছে যে born of God, ঈশ্বৰৰ পৰা জন্ম হোৱা ল'ৰা বা ছোৱালী। যেতিয়া আপুনি খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে, তেওঁ আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিলে। মোৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ দুখ ভোগ কৰিলে, কষ্ট পালে, অনেক শাস্তি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু ক্ৰুচত মৃত্যুবৰণ কৰিলে, নিজৰ বহুমূল্য প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে মোৰ কাৰণে। যেতিয়া আপুনি এই কথাটো বিশ্বাস কৰে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক মোৰ কাৰণে পঠাই দিছিলে, এই কথাটো যেতিয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰে, সেই খ্ৰীষ্টই আপোনাক অধিকাৰ দিয়ে ঈশ্বৰ যিজন সৃষ্টিকৰ্তা তেওঁক আপুনি পিতা বা বাবা বুলি মাতিব পাৰে আৰু তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্য হয়। Praise the Lord. 2 নম্বৰ, আমি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱা মানে ঈশ্বৰৰ মৰমটো বিষয়ে জনা আৰু অভিজ্ঞতা পোৱাত। To become a member of God's family means to know and experience His love. ईश्वर मरम तो जना, परमेश्वर का जो प्यार है उसको जानना और उसको अपना लाइफ में उसको एक्सपीरियंस होने देना। उसका एक्सपीरियंस अभिज्ञता ईश्वरर जो मरम तो केने धৰণৰ ताक अनुभव কৰিব পৰা, তেতিয়া আপুনি ईश्वरर परियाলৰ एजन सदस्य হ'ব পাৰিব। जब तक आप परमेश्वर का प्यार, जब तक परमेश्वर का जो प्यार का बारे में आप जानेंगे नहीं और परमेश्वर का प्यार आप एक्सपीरियंस नहीं करेगा, उसका आपका एहसास नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर का संतान नहीं बन पाएंगे। नाम मात्र आप परमेश्वर का संतान या परमेश्वर का मैं पुत्र या पुत्री हूं बोल के आप बोल सकेगा मुंह से, लेकिन आप सचमुच परमेश्वर का संतान नहीं हो पाएंगे until and unless you experience and know the love of God. इंग्लिश में डैडी बोला जाता है, डैडी। और डैडी वर्ड जो है वो अरामिक वर्ड अब्बा से मिलता है। अरामी लोग अब्बा बोलते हैं और हम लोग इंग्लिश में डैडी कहा जाता है। तो आप अब्बा और डैडी जो है वो बहुत इंटीमेट, जो अपना सगी पिता को ये कह सकता है अब्बा या जो डैडी या पिता जो अपना सगी पिता है, जी एकेबारे निजर पिता है তেওঁক ডেডি বুলি কয় ইংৰাজীত, বা আৰামিয়া ভাষা বা আৰবিকত আব্বা বুলি কোৱা হয় আৰু আমি পিতা বুলি কওঁ। কিন্তু আপুনি আব্বা বা পিতা কবৰ কাৰণে হলে এটো হৈছে ঈশ্বৰে দিয়া আপোনাক আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্লেছিং, যে আপুনি স্বৰ্গ যিজনে আকাশমণ্ডল পৃথিৱী সকলো বনালে আৰু যিজনে আজাৰ সকলো জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে, তেওঁক আপুনি আব্বা বা পিতা বা আপুনি কি বুলি কয় তেওঁক আপুনি ডেডি বুলি মাতিব পাৰে। কি কাৰণে? ঈশ্বৰে আপোনাক নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বনালে আৰু আপুনি খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি তেওঁ সদস্যতা পালে। এতিয়া দ্বিতীয়তে আপুনি কি হ'ল, আপুনি তেওঁৰ মৰমটো গম পাব লাগিব। ঈশ্বৰে আপোনাক কিমান মৰম কৰিলে। Ephesians chapter 2 and verse 15 যদি আপোনালোকে পঢ়ে, Ephesians chapter 2 and verse 15
Ephesians 2:15 পদ যদি আপোনালোকে পঢ়ে, by setting aside in his flesh the law with his commands and regulation, his purpose was to create himself one new humanity out of the two, thus making peace. খ্ৰীষ্টতে ঈশ্বৰে এক নতুন মানুহৰ সৃষ্টি কৰিলে। খ্ৰীষ্টত ঈশ্বৰে এক নতুন মানুহৰ সৃষ্টি কৰিলে। বহুত এইটো আপুনি বুজিলে বহুত আনন্দৰ কথা আৰু বহুত এটা গভীৰ কথা বুজিব পাৰিব। যেতিয়া খ্ৰীষ্টক ক্ৰুচিফাই কৰা গ'ল, খ্ৰীষ্টক ক্ৰুচিফাই কৰাৰ আগতে পুৰণা মানুহ, ছাপ'জ এজন পুৰণা মানুহৰ গোটেই লেতেৰা কেৰেক্টাৰখিনি খ্ৰীষ্টত দি দিয়া গ'ল আৰু খ্ৰীষ্টই সেই মানুহৰ পাপ লেতেৰা সকলোবিলাক লৈ তেওঁ ক্ৰুচিফাই হ'ল। যেতিয়া ক্ৰুচিফাই হ'ল বা ক্ৰুচবিদ্ধ হ'ল, তেওঁ লেতেৰা গোটেই কেৰেক্টাৰখিনি ক্ৰুচত থাকি গ'ল, কিন্তু ঈশ্বৰে খ্ৰীষ্টকহে জীয়াই তুলিলে, পুৰণা লেতেৰা মানুহজনক জীয়াই নতুলিলে, খ্ৰীষ্টক তুলিলে। এতিয়া যিসকলে খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে পুৰণাটো থাকি যায় ক'ত? ক্ৰুচত। আৰু যিবিলাকে খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকক ঈশ্বৰে নতুন কৰে, নিউ ক্ৰিয়েশ্যন কৰে। সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ মৰমটো বুজিবৰ কাৰণে হ'লে আমি প্ৰথমতে পুৰণা স্বভাৱবিলাক, লেতেৰা স্বভাৱবিলাক, বেয়াবিলাক আমি ক্ৰুচত ত্যাগ কৰিব লাগিব, এৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত ঈশ্বৰে আমাক এজন নতুন মানুহ হিচাপে আমাক সৃষ্টি কৰিব। বাইবেলে কোৱা নিচিনাকৈ আমি নতুন সৃষ্টি হ'ম, যিটো এতিয়া আমি এইটো এফিচিয়ান চেপ্টাৰ 2:25 আমি পঢ়িবলৈ পালো। ৰোমান চেপ্টাৰ 5:1 যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাতো লিখা আছে, therefore since we have been justified through faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Justification, जब हमें जस्टिफाई किया गया है, हमें देखा गया है, हमें परख के देखा गया है, हमें हर एक किस्म का जो हमारा कैरेक्टर को, हमारा पाप को, हमारा सब को देखा गया है और हमें ठहराया गया है कि ये अभी यीशु मसीह को विश्वास किया है, इसलिए इसका पाप सब क्षमा कर दिया गया, एक नया सृष्टि है। तो आज हम लोग यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ पीस मतलब शांति हम लोग हो सकता है। मतलब आज परमेश्वर का जो परमेश्वर का परिवार होके हम लोग शांति से यीशु के द्वारा शांति से बैठ सकता है। So becoming a part of God's family, you have to know and experience the love of God. And what is the love of God? That is written clearly in John chapter 3:16. যোহন 3:16 পদত লিখা কথাটো হৈছে ঈশ্বৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰেম, আৰু সেইটো হৈছে ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যিজনে তেওঁক বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। সেইকাৰণে আপুনি ঈশ্বৰৰ মৰমটোক এক্সপেৰিয়েন্স নকৰাকে, ঈশ্বৰে কেনেকৈ মোক মৰম কৰিছে, ঈশ্বৰে মোক কেনেকৈ ভাল পালে, ঈশ্বৰে মোক কিদৰে প্ৰেম কৰিলে নজনাকে আপুনি তেওঁক আব্বা পিতৃ মাতিবৰ কাৰণে নোৱাৰে। বাইবেলে কৈ আছে যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ মৰমটো গম পাব, ঈশ্বৰে মোক কিমান মৰম কৰিলে, মই পাপী থাকোঁতেই মই নজনাকে মোৰ পাপটো ধুবৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্ট নামি আহিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টই মোৰ পাপটোৰ কাৰণে তেওঁ ক্ৰুচত হত হ'ল। আৰু আজি যেতিয়া মই যীশুক চিনি পাইছোঁ, তেতিয়া মই যেতিয়া নিজৰ পাপসমূহ ক্ষমা খোজোঁ, যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ ক্ষমাদানৰ গুণৰ যোগেদি, তেওঁৰ তেজৰ যোগেদি মোৰ পাপটো ধুই দিয়ে। কিমান আচৰিত প্ৰেম, কিমান আচৰিত প্ৰেম ঈশ্বৰৰ, কিমান মহান প্ৰেম ঈশ্বৰৰ। যেতিয়া আপুনি তেওঁৰ এই প্ৰেমটো গম পাব, তেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক মোৰ পিতা বুলি ক'ব পাৰিব, আপুনি তেওঁক সম্বোধন কৰিব পাৰিব। Number 3, to becoming a member of God's family means your meet যিবিলাক আপোনাৰ দৰকাৰ আছে, needs are meet, সকলো দৰকাৰবিলাক আপোনাৰ পূৰা হ'ব ঈশ্বৰৰ যোগেদি। যিকোনো আপোনাৰ দৰকাৰ আছে সেই সকলো দৰকাৰবিলাক যিবিলাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাক ঈশ্বৰে পূৰা কৰিব। বাইবেলে কৈ আছে जो आप परमेश्वर का जब एक फैमिली बनेंगे, फैमिली बनने के साथ मतलब क्या होगा, आपका जो भी नीड्स है, जो भी जरूरत है वो प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता ने पूरा करेगा। Hebrew chapter 4:16
Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. इसका मतलब परमेश्वर ने, पिता ने हमें उनका पास आने के लिए, जब आप एक परमेश्वर का फैमिली बनेंगे तो आप पिता का पास आना पड़ेगा, क्योंकि आप पिता से आपका रिक्वेस्ट रखना है, आपका जो भी प्रार्थना रखना है। तो आप पिता का पास आने के लिए आपको परमेश्वर ने क्या दिया है? एक वे दिया है, वो है प्रार्थना। আপুনি এতিয়া ঈশ্বৰৰ সদস্য, যেতিয়া সদস্য হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ঈশ্বৰে এটা সহজে তেওঁক পাব পৰা, সহজে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব পৰা, সহজে তেওঁৰ পৰা আপুনি আশা কৰিব পৰা, পাব পৰা উপায় দিছে। সেয়া হৈছে খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি প্ৰাৰ্থনা, প্ৰেয়াৰ থ্ৰু জিজাছ ক্ৰাইষ্ট। সেইকাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছিলে বাইবেলত, তোমালোকে মোৰ নামেৰে যি সকলো খুজিবা সেই সকলো সিদ্ধ কৰা হ'ব। Whatever you ask in my name will be given, will be done। जो भी तुम्हें मांगोगे मेरे नाम में वो तुम्हें दिया जाएगा। कौन देगा? यीशु ने नहीं, पिता ने देगा। लेकिन आप मांगोगे कैसे? किसके द्वारा? आप यीशु के द्वारा मांगेंगे। इसलिए आप जो भी प्रार्थना हम लोग करते हैं वो प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा ही जाना पड़ेगा, तब पिता जाके उसको पूरा करेगा, फुलफिल होगा। इसीलिए हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना का एक्सेस हमें दिया गया है, एक्सेस मतलब प्रवेश करने के लिए, घुसने के लिए, कहां? परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन, जहां परमेश्वर बैठा रहता है, जहां मामूली आदमी, कोई भी आदमी वहां नहीं जा सकता, वहां वो जगह में परमेश्वर ने आपको आने के लिए आपको दिया है, रास्ता खोल दिया है, दरवाजा खुला है। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा आप घुसते हैं। अभी जाके आप जब परमेश्वर का आगे प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना कैसा होता है? होली स्पिरिट आपको मदद करता है, आपको परमेश्वर का आगे ले जाके आपको बोलने देता है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मेरा भावना ये है। आप रखते हैं और सब प्रार्थना सुनने के बाद यीशु के द्वारा आपका प्रार्थना को फुलफिल किया जाता है, आमेन हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो ঈশ্বৰৰ যেটো পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱা মানে আপোনাক ঈশ্বৰে কি দিছে? আপোনাক সকলো বস্তুবিলাক আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত যেন ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে এটা উপায় দিছে, আৰু সেইটো হৈছে প্ৰাৰ্থনা। খালি আপোনাক প্ৰয়োজনীয়তা বা আপোনাৰ যেটো দৰকাৰীবিলাক আছে, এনেকুৱা জীৱনৰ কাৰণে যেটো আছে সেইটো নহয়, আপোনাৰ ঈশ্বৰীয় জীৱনৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিছে। परमेश्वर सिर्फ आपका जो नीड्स है, जो जरूरत है, ये खाने के लिए, पहनने के लिए है, वो चीज सिर्फ नहीं, आपका इटर्नल, आपका शरीर मतलब आत्मा के लिए जो चाहिए वो भी प्रभु ने फुलफिल करेगा बोल के बाइबल में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 31 to 33। So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. কি খাম, কি পিন্ধিম, এনেকে চিন্তা নকৰিবা, কিয়নো তোমালোকৰ পিতৃয়ে জানে যে তাক তোমালোকক লাগে। বেলেগ মানুহবিলাকে, ঈশ্বৰক নজনা মানুহবিলাকে নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকে, মই কি খাম, কি পিন্ধিম, কি হ'ব, চিন্তা কৰি থাকে। কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে সেইটো মই জানো যে তোমালোকক দিব লাগে। সেইকাৰণে মথি 7 অধ্যায় লিখা আছে, বাপেকক পিঠা খুজিলে পুতেকক শিল দিব, বাপেকক মাছ বিচাৰিলে তাক কেঁকুৰা দিব। এনেকুৱা কোন আছে? যদি আমি নিজৰ সন্তানক আমি যদি বিচৰা মতে বস্তু আনি দিওঁ, আমি তেওঁলোকে বিচাৰে যদি 100 টকা বস্তু আমাৰ হাতত নাথাকিলেও আমি 50 টকা হ'লেও 20 টকা হ'লেও বস্তু এটা আমি আনি দিওঁ, যে হেকে বস্তু কম দামত হ'লেও আমি আনি দিওঁ, কিয়নো আমি পুত্ৰ বা কন্যা সন্তানক আমি মৰম কৰোঁ। তেনেহ'লে স্বৰ্গত থকা পিতা, আমি মানুহ জাতি, আমি আমাৰ কিছুমান জেগাত আমাৰ কি আছে, আমি নোৱাৰোঁ, আমি কিছুমান জেগাত আমি পুৰা কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু স্বৰ্গত থকা পিতা যিজন অসীম, যিজনে সকলো বস্তু বনালে, আপোনাক কি লাগে, আপোনাৰ পৰিয়ালক কি লাগে তাক তেওঁ জানে। আৰু বাইবেলে কৈছে he knows, your heavenly Father knows that you need them। স্বৰ্গীয় থকা পিতৃয়ে জানে যে তোমালোকৰ কিন্তু দৰকাৰ আছে। কিন্তু তেওঁ কৈছে প্ৰথমে কি বিচাৰিব কাৰণে কৈছে, তেওঁ ৰাজ্য আৰু ধাৰ্মিকতা বিচাৰা, তাতে এই সকলো
বিলাক তোমালোকক দিয়া হ'ব। সো आज आप और मैं परमेश्वर का जब संतान परमेश्वर का फैमिली का जो हम लोग एक मेंबर बने हैं, तो परमेश्वर ने हमें जो एक्सेस करने के लिए, उसका पास आने के लिए जो चीज दिया वो है प्रार्थना। और प्रार्थना में हमें क्या मांगने बोला है? परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता मांगो तो ये सारे चीज तुम्हें दिया जाएगा। तो आज आपको हमको क्या चाहिए परमेश्वर जानता है, लेकिन आप जब परमेश्वर का परिवार का सदस्य बनते हैं तो परमेश्वर आपको क्या देता है? प्रार्थना करने का एक वे देता है। आप उसको आप लेके प्रार्थना कर सकता है। उसका बाद परमेश्वर का टू बिकम ए पार्ट ऑफ गॉड्स, ए मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली मीन्स यू आर हैविंग ए लार्ज एंड लविंग फैमिली। যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব, আপুনি এটা সৰু পৰিয়ালৰ সদস্য নহয়, এটা বহুত ডাঙৰ পৰিয়ালৰ সদস্য। আৰু সেই সদস্যবিলাকৰ মাজত কি আছে? একতা আছে, মৰম আছে। সেই পৰিয়ালৰ সদস্যবিলাকৰ মাজত একতা আছে, মৰম আছে। Those who have received Jesus Christ have him not only as Lord and Savior but also as elder brother। যিসকলে খ্ৰীষ্টক নিজৰ প্ৰভু বুলি মানিছে, কেৱল প্ৰভু বুলি মানিছে তেনে প্ৰভু হিচাপে পাব তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু নিজৰ ডাঙৰ ককায়েক বুলি পাইছে। বাইবেলে কৈ আছে, মই কোৱা নহয়। Romans chapter 8 verse 29, For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters। यीशु ख्रिस्त, यीशु मसीह जो है वो सब में से पहले जन्मा हुआ जो बेटा है, और उसका बाद जो भी यीशु को विश्वास करते जाएगा वो उसका भाई बहन बनते बनते जाएगा। सिर्फ यीशु हमारा प्रभु ही नहीं, वो हमारा बड़ा भाई है, ये बाइबल कह रहा है। जो यीशु को विश्वास करने जितना भी व्यक्ति है वर्ल्ड में, वो हम लोग का फैमिली है, और वो हम लोग इतना बड़ा फैमिली का सदस्य है। इसीलिए जब आप यीशु का जब आप परमेश्वर का फैमिली का मेंबर बनते हो, वो मेंबरशिप एक थोड़ा सा फैमिली का नहीं है, वो सिर्फ आपका कलीसिया का नहीं है, वो सिर्फ एक डिनोमिनेशन का नहीं है, एक वर्ल्ड वाइड है, पूरा विश्व का है। और विश्व का जितना भी बिलीवर्स है सब एक फैमिली है। चाहे अलग अलग डिनोमिनेशन हो सकता है, लेकिन वो एक फैमिली है। और उसका बीच में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। डिनोमिनेशन बैरियर नहीं आना चाहिए। जो हम लोग का जो स्क्रिप्चरल जो भी हम लोग डिफरेंसेस होता है वो नहीं आना चाहिए। हमारे बीच में क्या होना है? हमारा मदद की থাকিব লাগে এইটো হৈছে যে আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান, তেওঁ আমাৰ পিতা, আৰু খ্ৰীষ্ট আমাৰ প্ৰভু, আমাৰ ডাঙৰ ককায়েক, আমি তেওঁৰ ভাই ভনী হয়, আমি এটা পৰিয়ালৰ সদস্য। সেইকাৰণে আমি যেতিয়া খ্ৰীষ্টৰ ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হওঁ, তেতিয়া এটা আমাৰ ডাঙৰ সমাজ পাওঁ। বাইবেলত আৰু এটা কথা লিখা আছে, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29, दुख का बात है उन लोगों के लिए जो यीशु के लिए अपना घर परिवार छोड़ के आता है। मैथ्यू चैप्टर इसमें लिखा है, आप क्या बोलते हैं, 19 वर्स 29 में अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, जो मेरे लिए अपना परिवार, भाई बहन, माँ बाबा, पत्नी, बच्चा, घर द्वार, जो बिजनेस या जो भी छोड़ के आएगा, दुनिया में 100 टाइम्स मिलेगा और इटर्नल लाइफ मिलेगा। ये बाइबल कह रहा है, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 29। যিসকলে মোৰ কাৰণে নিজৰ পৰিবাৰ, ঘৰ, ভাই ভনী, মা দেউতা, পত্নী, ল'ৰা ছোৱালী এৰি মোৰ পিছত আহে, এই পৃথিৱীত 100 জন পাব। आज से जब मैंने प्रभु का विश्वास किया, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया यीशु का विश्वास करने का वजह से। लेकिन मेरा जो यीशु का विश्वासी लोग मुझे अपना भाई का प्यार, बहन का प्यार, माँ का प्यार, पिताजी का प्यार, सब अपना अपना जैसे दिया, क्योंकि वो लोग दिखाया कि हम लोग एक परिवार का सदस्य हैं। इसीलिए भाई बहन, आज आप परिवार, आप आनंदित हो जाइए, आप अकेले नहीं हैं। आज आप अकेले नहीं है, यीशु आपका साथ में है, आपका जो बिलीवर्स लोग आपका साथ में है। आप आनंद कीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, जो आप ये परिवार का, परमेश्वर का परिवार का सदस्य बनते हैं तो आप एक बड़ा और एक प्यारा फैमिली का मेंबर बनते हैं। उसके बाद जब आप परिवार का सदस्य बनते हैं, देयर इज ए लाइफ विथ ए पर्पस।
ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য যেতিয়া আপুনি হয় আপোনাৰ জীৱনৰ এটা উদ্দেশ্য থাকে ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনৰ এটা উদ্দেশ্য বনাই দিয়ে এইম কৰি দিয়ে আপোনাক এটা লক্ষ্য দিয়ে যেতিয়ালৈকে আমি যিছুক নাজানো আমাৰ লক্ষ্য নাথাকে আজিকালি মোটিভেশনাল স্পিকাৰ বিলাকৰ যোগা যেতিয়া আমি মোটিভেশনাল স্পিকাৰ আমি ওৱৰ্ল্ডলি ফালৰ পৰা চাওঁ কিছুমানে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত স্পিচ দিয়ে আমি কেনেকৈ মোটিভেট কৰি মই সকলোতকৈ বেছি নম্বৰ পাওঁ তাক তেওঁ মোটিভেট কৰি দিয়ে চাকৰিৰ কাৰণে কিছুমানে মোটিভেশনাল স্পিচ দিয়ে তেতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে কেনেকৈ মই ভালকৈ ৰাইজ কৰিব পাৰিম বিজনেছৰ কাৰণে দিয়ে কেনেকৈ মই ভাল বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'ব পাৰিম তাৰ ওপৰত দিয়ে আৰু মানুহে এইটোকে ভাবে এইটো মোৰ লক্ষ্য ডাঙৰ ডাঙৰ আজিকালি মানুহবিলাকে কয় যে তেওঁলোকে শিক্ষা দিয়ে যে এটা ভাল ব্যক্তি ষ্টাবলিছ মানুহ বন মানুহে তোক চালাম কৰিব মানুহে তোক সন্মান কৰিব এইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈ যায় আমাৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা ভাই ভনীসকলে এটা মই এনেকুৱা হ'ম মানুহে মোক চালাম কৰিব মোৰ গাড়ী হ'ব মোৰ হয়তো হ'ব টকা পইচা হ'ব এইটোৱে কি হয় জীৱনৰ লক্ষ্য लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप यीशु का परिवार का सदस्य बनते हैं परमेश्वर आपका लाइफ का एक डेस्टिनेशन देता है एक आपका लाइफ का एम देता है उस लाइफ का एम में आपको जाना है उसको पूरा करना है उसको आपको आगे ले जाना है जब आप परमेश्वर का परिवार का सदस्य बनते हैं तो आपको द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट आपका जीवन में ऑपरेट करता है Gifts of the Holy Spirit पवित्र आत्मार बरदान बिलाक आपनाक दिए केले why परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान किस लिए देते हैं वो पवित्र आत्मा का वरदान आपके लिए नहीं है वो पवित्र आत्मा का वरदान आपका जैसा दूसरा भाई लोगों का है जो परमेश्वर का परिवार का हिस्सा है उन लोगों के लिए सपोज द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग जानते हैं 9 gifts of the Holy Spirit 9 fruits of the Holy Spirit 7 spirit हम लोग जानते हैं আমি জানো কিন্তু তার বাহিরেও আমাক কিছুমান এবিলিটি দিছে দান দিবৰ কাৰণে উদগাবৰ এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে মানুহক দেখভাল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবৰ কাৰণে এইবিলাক কি কাৰণে বৰদানবিলাক আমাক দিছে সকলোৰে সব বৰদান নাথাকিব পাৰে কিন্তু এই বৰদানবিলাক কি কাৰণে দিছে যাতে ঈশ্বৰৰ যিমান লৰা ছোৱালীবিলাক আছে পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ উন্নতি হয় তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিতৰত এই গিফ্টবিলাক কাম কৰিব দিয়ে gift of Holy Spirit is not belongs to you it belongs to the Holy Spirit and Holy Spirit is there to use you पवित्र आत्मा वहां रहते आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको तब तक इस्तेमाल करेगा जब आप सही परमेश्वर का मायने रखते हैं परमेश्वर का इच्छा का अनुसार चलते हैं तब तक ये गिफ्ट आपको ऑपरेट करेगा चलाएगा जब आपका घमंड आएगा लालच आएगा बुराई आएगा गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट आपसे चला जाएगा इसीलिए भाई बहन if you are moving with the holy gift of the Holy Spirit it's not for you it's for the brothers and sisters in Christ those are with you among you use the gifts of the Holy Spirit for them not for your own benefit মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম তেওঁ বেমাৰী ভাল হ'ব মোক দান দিব মই দৰ্শন চাই দিম ভিজন চাই দিম তেওঁ মোক কাৰণে দান দিব মই প্ৰফেসি কৈ দিম আৰু তেওঁক কাৰণে মই সপোন দেখি দিম আৰু তেওঁ মোক দান দিব নহয় the gifts of the Holy Spirit is not for your own benefit आपका अच्छाई के आपका बेनिफिट के लिए नहीं है जो परमेश्वर का जितना भी परिवार का सदस्य है उन लोगों के लिए एक गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट है और एक आपको कमीशन दिया गया है उसके बाद आपको एक कमीशन दिया है मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्सेस 19 एंड 20 में ग्रेट कमीशन लिखा दिया गया है कि तुम जाओ और जो अभी तक परमेश्वर का परिवार का सदस्य नहीं बना है उन लोगों को भी इनवाइट करो আমাক ঈশ্বৰে ইনভাইট কৰিব কাৰণে আমাক এটা কমিশন কৰিছে যে যিবিলাক এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হোৱা নাই সেই ভাই ভনীসকলকো মোৰ বাক্য দি মোৰ ওচৰলৈ লৈ আনা দিস ইজ দা গ্ৰেট কমিশন এটো হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা আজ্ঞা ঈশ্বৰে আমাক দিয়া সেইকাৰণে ভাই ভনীসকল ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে হলে ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে এটা লক্ষ্য বা এইম আপোনাক বনাই দিব Finally, to become a part of God's family means
having an eternal inheritance. সদায় থকা এটা যেটো ইনহেৰিটেন্স বা সদায় থকা আমি সপবেক থাকিব কাৰণে আমাৰ কাৰণে যে প্ৰয়োজনীয়তা মানে ঘৰ হোক বা আমাৰ কাৰণে জাগা হোক লাভ কৰাটো যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হয় তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে সদায় থকা এটা স্থান যুগুত কৰি দিয়ে যিদৰে ককা দেউতাকৰ হা সম্পত্তি দেউতাকে পায় দেউতাকৰ হা সম্পত্তি লৰা ছোৱালীয়ে পায় এটো পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা ইনহেৰিটেন্স পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা পোৱা এবিলাক অলপ দিনৰ কাৰণে পেৰিশেবল শেষ হৈ যায় নষ্ট হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আমি খ্ৰীষ্টক ওচৰলৈ আহো বা ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হওঁ তেতিয়া আমাৰ কাৰণে যিটো সদায় থকা সম্পত্তি এই হৈছে স্বৰ্গত আমাৰ কাৰণে স্থান ঈশ্বৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে when we become a member of God's family God has allotted us the inheritance in heaven you are allotted a place in heaven because you are a member of God's family आप परमेश्वर का परिवार का सदस्य हो इसके लिए आपके लिए एक जगह परमेश्वर ने रख दिया है Colossians chapter 1 verse 12 and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light পোহৰৰ ৰাজ্যত পবিত্ৰ মানুহৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে যে তোমাক কোৱালিফাই কৰিলে যোগ্য কৰিলে তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ কৰা প্ৰেজ দ্য লৰ্ড কিমান ধুনীয়া কথা কলছিয়ান চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্স 12ত লিখা আছে পোহৰৰ ৰাজ্যত ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ মানুহবিলাকৰ সৈতে বাস কৰিবলৈ তেওঁ যে তোমাক মনোনীত কৰিলে তাৰ বাবে ঈশ্বৰক তুমি ধন্যবাদ দিয়া এয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হলে আমাৰ কি লাভ now shortly অতি সোনকালে हम लोग डिस्कस करेंगे how to become a member of God's family ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য কেনেকৈ হ'ব পাৰে So hearing this message many will think that now how I can become the member of God's family सोचेंगे अभी बहुत सा भाई बहन मेरा वचन को सुन के सोचेगा कि मैं कैसे परमेश्वर का जो परिवार का सदस्य बनूं मैं आपके लिए कुछ उपाय लेके आया हूं जल्दी से आप इसको आप ध्यान कीजिएगा एक नंबर हियर द गॉस्पेल पहला बात है आप जो सुसमाचार अर्थात प्रभु का वचन को सुने हियर द गॉस्पेल गॉस्पेल का बारे में अगर गॉस्पेल का पावर का बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है तो हमारा YouTube चैनल में अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन में एक वीडियो है पावर ऑफ द गॉस्पेल आप उसे जो आई बटन में क्लिक करके आप उसके मिल सकता है आप देखिएगा हियर द गॉस्पेल आप परमेश्वर का वचन को सुने बाइबल कह रही है रोमन चैप्टर 1 verse 16 for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes first to the Jew then to the Gentiles শুভবাৰ্তা जो gospel जितो power হৈছে ঈশ্বৰৰ শক্তি এই মানুহক কি কৰিবলৈ আছে salvation দিয়ে প্ৰথমতে জিহুদী বিলাকক তাৰ পিছত পৰজাতি বিলাকক গতিকে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি তেওঁৰ বাক্যটো শুনিব লাগিব Romans chapter 10 verse 14 how then can they call on the one that have not believed নুশুনিলে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিব So you have to hear the word of God আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনিব তেতিয়া আপোনাৰ বিশ্বাস হ'ব and how can they believe in the one whom they have not heard যেতিয়া আপুনি যীশুৰ বিষয়ে শুনিব তেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিব and how can they hear without someone preaching to them যেতিয়ালৈকে আপোনাক প্ৰচাৰ কৰা নহ'ব তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ শুনিব সেই কাৰণে হ'ব বাৰ্তা প্ৰচাৰটো শুনক যেতিয়া আপুনি হববাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাটো শুনিব যিশুৰ বিষয়ে জানিব যেতিয়া জানিব তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস হ'ব আৰু বিশ্বাস হোৱাৰ যোগেদি আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব পাৰিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড নাম্বাৰ 2 বিলিভ খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰক 2 নম্বৰ হৈছে আপুনি বিশ্বাস কৰক খ্ৰীষ্টক
Hebrews chapter 11 and verse 6, ইব্ৰী 11 অধ্যায় 6 পদ, and without faith it is impossible to please God. আপুনি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে যদি আপোনাৰ ভিতৰত বিশ্বাস নাই। এইটো কোনো ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান নহয় যে আপুনি আহিলে বহিলে আৰু গুচি গ'ল, হৈ গ'ল, বেলেগে কৰি দিলে, পাষ্টৰে কৰি দিলে বা আন কোনোবাই কৰি দিলে, মই আহিলো জমা হ'ল, বহিলো, গুচি গ'লো, নহয়। ये एक आपका आप जो क्रिश्चियनिटी जो है, सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। आपके लिए आपको प्रार्थना मदद देने वाला आदमी है, आपका होके प्रार्थना करना व्यक्ति है, लेकिन पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिकॉज बाइबल सेज विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him। जो प्रभु का पास आते हैं पहले उसको ये विश्वास होना पड़ेगा कि वो है। যদি আপুনি বিশ্বাসেই নকৰে যে খ্ৰীষ্ট নাই বা আজি তেওঁ আহাই নাই বা তেওঁ কি হয় মই তেওঁক বিশ্বাস নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁ যে আপোনাক আপুনি বিচাৰিলে পাব, এইটো মিছা কথা। আপুনি বিচাৰে যে তেওঁক পাব, মিছা কথা। पहला बात है आपको यह विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास में लाना पड़ेगा कि आप विश्वास से परमेश्वर को आप खुश कर सकता है, प्लीज कर सकता है, और आपको यह विश्वास करना पड़ेगा वो है, और जो उसको ढूंढता है उसको वो पाने के लिए देता है। मार्क 16 वर्सेस 15 to 16 अगर पढ़ेगा आप, उसमें लिखा गया है जो विश्वास करेगा वो क्या होगा, उसमें क्या जाए, उसको क्या मिलेगा, उसको रक्षा पाएगा, वो उद्धार पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको दंडाज्ञा दिया जाएगा, कंडेमनेशन। गतिके आपुनी বিশ্বাস কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিব ঈশ্বৰ আছে, যেতিয়া আপুনি বিশ্বাস কৰিব যীশুখ্ৰীষ্টক তেওঁ পৃথিৱীলৈ পঠাই দিছে মোৰ কাৰণে আজি পৰা 2000 বছৰ আগতে, আৰু মোৰ পাপৰ কাৰণে তেওঁ দুখ ভোগ কৰিলে, কষ্ট ভোগ কৰিলে, ক্ৰুচত প্ৰাণ ত্যাগ কৰি তেওঁ 3 দিন কবৰত আছিলে, তাৰ পৰা তেওঁ জি উঠিলে, আজি পিতৃৰ ওচৰত বহি আছে। যেতিয়া আপুনি কথাটো বিশ্বাস কৰিব তেতিয়া এই বিশ্বাসৰ যোগেদি আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব পাৰিব। 3 নম্বৰ, ৰিপেন্ট অফ সিন, পাপৰ পৰা পশ্চাতাপ কৰক। পাপৰ পৰা পশ্চাতাপ কৰক। পাপৰ পৰা পশ্চাতাপ নকৰিলে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। Acts chapter 2 verses 37-38 the Bible says, when the people heard this they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? পিতাৰে যেতিয়া এনেদৰে শিক্ষা দি আছিলে যেনেকৈ মই শিক্ষা দি আছোঁ, পিতৰে শিক্ষা দিয়াটো যেতিয়া অনেক মানুহবিলাকে শুনিলে তেওঁলোকে অন্তৰখন বিষালে, খুব অন্তৰত আঘাত হ'ল, তেওঁলোকে আহিলে আমি পাপ কৰিছোঁ, আমি কেনেকৈ মুক্তি পাম, আমি কি কৰিব লাগে, শিষ্যবিলাকক সুধিলে। भाई बहनियों, जो आज मेरा बच्चों को सुन रहा है सिर्फ सुनने वाला ना बने, आपको पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर ने समय दे रहा है। नूह का जीवन में देखिएगा, मैं जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। नूह का लाइफ में देखिएगा, उसने जहाज बनाया, उस समय आज का जैसा टेक्नोलॉजी नहीं था कि आज का जैसा जो जहाज बना लिया, उस समय का बात है जब नूह उसका 3 बेटा जंगल में जाके जो लकड़ी काट के लेके आया, बुक के लेके आया, उसको अच्छा से बना के एक बड़ा सा जहाज बनाया, डबल स्टोरी जहाज बनाया। आदमी लोग आके नोहा को पूछ रहा था क्या कर रहे हो नोहा? उसने बोला परमेश्वर ने कहा है बड़ा सा फ्लड होगा, बड़ा सा बाढ़ आएगा, सब आदमी डूबेगा, मरेगा, लेकिन इसमें जो व्यक्ति इसमें चढ़ेगा वो बचेगा। सब आदमी उसको खिल्ली उड़ाया, हंस दिया, क्योंकि उस समय तक आकाश से बारिश नहीं हुआ था। कल परसों भूचाल आ गया, आप देखिए असम में जो भूचाल आया, भूचाल तो हो गया, अभी जमीन में से पानी फुहारा का जैसा निकल रहा है। जहां पानी पहले नहीं था उस जगह में जमीन में से पानी निकल रहा है। असंभव बात है लेकिन हो रहा है। और जो जिस जगह पे जो फील्ड था, पेडी फील्ड था, जहां धान का खेती होता था, उसमें अभी दलदली का जैसा हो गया, आदमी पांव देने से पूरा वो जमीन हिलने लगा है। अभी ऐसा हो रहा है। उस समय में जमीन ऐसे पानी नहीं था, सिर्फ नदी बह रहा था। उस समय आकाश से पानी बारिश नहीं गिरा था, लेकिन जहाज बनाने का खत्म होने का बाद परमेश्वर ने नोहा को बोला अभी तुम अपना परिवार को लेकर जहाज पे चढ़ जाओ। जब उसने जहाज पे चढ़ गया तब
बाहर आकाश से पानी गिरने लगा, जमीन से पानी निकलने लगा। उस समय वो व्यक्ति लोग जो मोजेस को चिल्ला रहा था, उसने बोला बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उस समय जहाज का दरवाजा बंद हो गया था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर ने हमें टाइम दे रहा है रिपेंट होने के लिए, मन फिराव करने के लिए। आज ईश्वरे समय दिया से এই কোভিড-19 হোক বা মহামাৰী হোক বা ভূমিকম্প হোক বা নানা ধৰণৰ বেমাৰ হোক, মানুহৰ মৃত্যু হোক, এইটো দেখি আমাক পাপৰ পৰা ঘূৰিবৰ কাৰণে, মন ঘূৰাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে সময় দি আছে। তেতিয়া পিতৰে আজি পৰা 2000 বছৰ আগতে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিলে, তেতিয়া অনেক মানুহবিলাকে আহি পিতৰক সুধিলে, হোৱাট শ্বেল উই ডু, আমি কি কৰিব লাগে? পিতৰে ক'লে, ৰিপেণ্ট এণ্ড বি বেপটাইজড এভৰি ওৱান অফ ইউ in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. মন পালন কৰা আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে বাপ্তিজিম হোৱা তোমালোক সকলোৱে, যাতে তোমালোকে পাপৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰা আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰদান পাব পাৰা। পাপৰ পৰা পশ্চাতাপ নকৰিলে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰে। কনফেছ কৰক, স্বীকাৰ কৰক। Matthew chapter 10 verses 32-33, whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Prabhu Jisu Christe কৈছে, যিকোনোৱে মানুহৰ আগত মোক স্বীকাৰ কৰিব, ময়ো তেওঁক পিতৃৰ আগত স্বৰ্গত স্বীকাৰ কৰিম। যিকোনোৱে মানুহৰ আগত মোক অস্বীকাৰ কৰিব, ময়ো তেওঁক মোৰ পিতৃৰ আগত স্বৰ্গত অস্বীকাৰ কৰিম। সেইকাৰণে আপুনি খ্ৰীষ্টৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰক আপুনি সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক আপুনি বাবা পিতা বুলি মাতিবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টক স্বীকাৰ কৰক। বি বেপটাইজড। বাপ্তিস্ম লওক দুই প্ৰকাৰৰ। এটা হৈছে মন পালনৰ বাপ্তিস্ম, আজিৰ পৰা মই কৰি থকা কাম নকৰোঁ, এই কামৰ কাৰণে মই মৰিলোঁ, এই বেয়াবিলাক মোৰ পৰা দূৰ হওক যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত। দ্বিতীয় কথা হৈছে চিন হিচাপে, আজিৰ পৰা মই যীশুক নিজৰ উদ্ধাৰকৰ্তা হিচাপে মানিলোঁ, মই পানীত সোমাই 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে 2 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে থাকি ওলাই আহিলোঁ। সেয়া হৈছে বাপ্তিস্ম লোৱা, পাচনি কৰ্মত লিখা আছে। আৰু শেষত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে লিভ গডলি লাইফ, ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন কৰা। আপুনি কেৱল এইটো আপুনি শুনিব লাগিব ঈশ্বৰৰ বাক্য, আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব, আপুনি পাপৰ পৰা পশ্চাতাপ কৰিব লাগিব, আপুনি কনফেছ স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যীশুক, আপুনি বাপ্তিস্ম ল'ব লাগিব মন পালন আৰু শৰীৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু দ্বিতীয়তে শেষতে ঈশ্বৰীয় জীৱন। ৰোমান চেপ্টাৰ 6 verse 4, we were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. আমি খ্ৰীষ্টৰ নামত বাপ্তিজিম লোৱা দিনৰ পৰা পাপৰ পৰা আঁতৰি থাকি, বেয়া কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকি আমি চলি যাম। যেতিয়া আমাৰ জীৱনত জানি বা নাজানি কিবা ভুল হ'ব, বাপ্তিজিম লোৱাৰ পিছতো আমি খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত আমি ক্ষমা খুজিম, প্ৰভু আমাৰ পাপসমূহ ক্ষমা কৰি দিয়ক, মই জানি বা নাজানি কৰা পাপৰ পৰা, দৈনিক পাপৰ পৰা আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আমি ক্ষমা খুজি আগবাঢ়ি যাম, যাতে আমি এটা ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন কৰিব পাৰিম। যিদিনাখন যেনেকৈ ঈশ্বৰে মৃতবিলাকৰ মাজৰ পৰা খ্ৰীষ্টক তুলিলে, তেনেকৈ আমিও যদি খ্ৰীষ্টত থাকোঁ, আমি যদিও শাৰীৰিক ফালৰ পৰা মৰিম, কিন্তু ঈশ্বৰে নিজৰ শক্তিৰে আমাক তুলিব, আৰু তেওঁ যিটো জেগা প্ৰমিছ কৰিছে, সদা আমাক ইনহেৰিটেঞ্চ দিম বুলি কৈছে, সেই স্বৰ্গত আমাৰ কাৰণে জেগা দিব। ভাই ভনীসকল, মই আশা কৰোঁ বাক্যৰ যোগেদি আপোনালোকে অনেকেই আশীৰ্বাদ পাইছে, আৰু আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে যে সঁচাকৈ আমি পিতা বুলি মাতি আছোঁ, কিন্তু আমি জানো সঁচাকৈ তেওঁক পিতা বুলি মাতিবৰ কাৰণে আমি যোগ্য। हम जो पिता बोल रहे हैं, हम लोग अब्बा बोल रहे हैं, क्या मैं योग्य हूँ? अगर आप सोचते हैं मैं तो पिता बोलने का योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरा पाप भरा हुआ है, आज आप रिपेंट हो जाइए, पश्चाताप कीजिए। जो मैंने आपको जो वचन बोला, इसके द्वारा प्रभु आपको अपना परिवार का सदस्य बनाएगा, और जब आप परिवार का सदस्य बनेंगे तो आपके लिए परमेश्वर ने अनेक रास्ता को खोलेगा, बेनिफिट्स आपको देंगे। आइए प्रार्थना करें। Shall we stand together and pray? যিসকলে অনলাইনৰ যোগেদি আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানত থিয় হ'ব পাৰে, যিসকলে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে থিয় হ'ব আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব। মই আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে
আৰু বেমাৰৰ কাৰণে ৰোগৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰি দিম। আহক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. পবিত্র 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 জগত থকা মহান দয়ালু প্ৰভু পিতা, তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ। সকলো মহিমা মান মৰ্যাদা স্তুতি প্ৰশংসা ধন্যবাদ কৰিছোঁ। আব্ৰাহাম ইছহাক ইজৰাইলৰ ঈশ্বৰ জাকবৰ ঈশ্বৰ प्रभु তোমাক এই ৰাতিপুৱাৰ বেলা ধন্যবাদ দিছোঁ। प्यारे प्रभु, आपने सुंदर समय हमें दिया और आज का वचन आपने हमें प्रभु दिया। हम लोग जो प्रभु परमेश्वर का जो परिवार का सदस्य बनने का और परमेश्वर का परिवार का सदस्य हम लोग कैसे बन पाए, उसका बेनिफिट क्या है, हम प्रभु उसका बारे में आज का वचन के द्वारा जानने पाया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस वचन को दिया। और प्रभु आपको आपका जो भी परिवार का सदस्य लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, यहाँ उपस्थित होके जो यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करो पिता, इस समय मेरा हर एक गलती पाप अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा धो दे। मेरा जितना भी भाई बहन आज यहाँ उपस्थित है, हर एक का पाप अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा धो के आप शुद्ध करें। जो भाई बहन इस समय फेसबुक के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, हर एक का पाप अपराध गलती को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो के उन्हें शुद्ध कर दीजिए, ताकि इस समय आपका परिवार का हर एक सदस्य प्रभु पाप से छुटकारा पा सके। यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूँ, शैतान हमारा सभी का जीवन में से तो निकला, परमेश्वर का पास रहने में बाधा देने वाला शैतान, उनको विश्वास से उनके पास आने में बाधा देने वाला दुष्ट आत्मा, परमेश्वर का अपना पिता अपना अब्बा बोलने के लिए बाधा देने वाला शैतान, यीशु का नाम से हर एक भाई बहन का जीवन में से तो निकला। यीशु का नाम से दुष्ट आत्मा हर एक का जीवन में से निकला। जितना उनका बीमार करने वाला शैतान, जो भी कोविड हो रहा है, जो भी उनका बदन में प्रॉब्लम है, उसका परिवार में प्रॉब्लम है, उसका जितना उसका कलेशिया में प्रॉब्लम है, हर एक को लेकर तो चला जा यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से हर एक का जीवन में से तो निकल जा। अब इसी वक्त को छोड़ दे। जो इस समय मेरे साथ जुड़े हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, हर एक का जीवन में से तो निकल जा यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आपने जो वचन दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका पवित्र नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। आप आइए पिता, इस समय आप आइए, हमारा जीवन में आप आशीष कीजिए। आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने दे और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाइए यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। हर एक व्यक्ति का ऊपर पवित्र आत्मा आने दे, हर एक का ऊपर पवित्र आत्मा आने दे, हर एक को पवित्र आत्मा से प्रभु आप भर दीजिए, हर एक का जीवन में आप काम कीजिए। और प्रभु जो मेरा इस वचन को सुना है, जो भी अभी वीडियो को देख रहा है पिता, हर एक को आपका संतान होने के लिए, आपका परिवार का सदस्य बनने के लिए प्रभु आप लोग को मौका दे प्रभु, ताकि आपका दिया हुआ हर एक बेनिफिट वो लोग उठा सके और प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। और अंतिम समय में आपका साथ स्वर्ग में जाके प्रवेश करके आपका साथ रह सके। आप ऐसे आशीष कीजिएगा। पवित्र आत्मा उन लोग का जीवन में आइए और उनका जीवन को आप भर दीजिए, उनका जीवन को आप परिवर्तन कर दीजिए, नया बनाइए, आशीष कीजिए। हालेलुया। हर एक को आप आशीष कीजिए, हर एक को आपका आशीष से भर दीजिए। ओ शाखा राबा राबा शाकारी दी 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 तो शिखा लाबा राबा। पवित्र आत्मा आप काम कीजिए हर एक का जीवन में। यस लॉर्ड, इस समय पवित्र आत्मा आप जाइए। जो इस समय जो फेसबुक के द्वारा देख रहे उस भाई बहन का ऊपर आशीष आने दे। विश्वास के साथ वो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इसके द्वारा उन लोग को काम कीजिए, उन लोग का जीवन में काम कीजिए, मिराकल होने दीजिए, उन लोग का इस्तेमाल कीजिए, उन लोग का आपका संतान बनने के लिए आप आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बीमार है पिता, जो कोविड-19 से पीड़ित है, यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा, जो भाई बहन जो कोविड-19 से बीमार है, उन लोग का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से। कोविड वायरस उनका जीवन में से तो निकल जा। जो भी कमर दर्द, जो भी घुटना दर्द, जिसका बदन दर्द, जो बुखार, जो खांसी हो रहा है, यीशु का नाम से तो निकल जा। हर एक का जीवन में से निकल जा यीशु मसीह का नाम से। प्रभु आप आइए, आपका शरीर में लगा हुआ घाव के द्वारा
आप उन लोग को चंगा कर दीजिए। आपका शरीर में लगा हुआ कोड़ों के द्वारा आप उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु। ओ कोढ़े जो प्रभु आज से 2000 साल पहले आपका शरीर में मारा गया था, आपका शरीर से बहता हुआ लहू से आप हर एक को चंगा कर दीजिए। कोविड वायरस से बीमार है उन लोग को चंगा कर दीजिए। खांसी, जुकाम, बदन दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, यीशु का नाम से चंगा हो जाइए, यीशु का नाम से। प्रभु जो तेल और पानी लेके बैठे हैं पिता विश्वास के द्वारा, उनका ऊपर आशीष कीजिए। तेल और पानी लेके बैठने वाला जितना भी भाई बहन है, उन तेल और पानी प्रभु आपका पवित्र लहू में बदल दीजिए पिता। विश्वास के साथ और जो तेल और पानी इस्तेमाल करेंगे उनको प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो प्रभु पिता तेल लगा के बाहर जाएंगे उसको प्रभु आप सुरक्षित आपस आने के लिए, घर आपस आने के लिए आप आशीष कीजिएगा पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने हमारा विनती को सुना। प्रभु आने वाले दिनों में आपका संतान लोग का जीवन में प्रभु आपका आशीष रेडिएंट हो, प्रभु उज्जवल हो, मैं ऐसे दुआ करता हूं पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने मेरा विनती को सुना और आपने आशीष किया। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।